Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. आज के सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. एंड आज के सेशन के अंदर बच्चों वी आर गोइंग टू कवर टू थिंग्स. दो चीजें हमें कवर अप करनी है. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हाउ अ डिजिटल सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड. सो द फर्स्ट टॉपिक बच्चों इज हाउ digital certificate is obtained. और दूसरा बच्चों वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द क्वांटम क्रिप्टोग्राफी. So these are the two topics that we are going to work on in today's session. And the second topic बच्चों will be how actually we obtain how quantum cryptography actually works. Okay, so starting with the first one, how digital certificates are obtained first, and then फिर हम लोग आगे move करेंगे बच्चों. यहाँ पे just give me a minute. Digital certificate. Okay, so what happens बच्चों? Let's say this was the user. अजीब ही बन गया भैया. This was the user or you can say client that requested for a digital certificate. So बच्चों क्लाइंट क्या करता है आपके पास? क्लाइंट अपने एंड के ऊपर दो कीज जनरेट करता है. एंड ऑफ कोर्स यू पीपल नो प्राइवेट एंड द पब्लिक की. अब क्या करता है? और एक और चीज होती है इसके पास, यूजर के पास, दैट इज कॉल्ड यूजर आईडी. सो क्लाइंट या यूजर ये दो चीजें बच्चों कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद रिक्वेस्ट करता है टू an organization, and that organization बच्चों is called certificate authority. अब ये यूजर आईडी क्या कंटेन करती है? आपके पास यूजर आईडी कंटेन्स नेम ऑफ organization, address of the organization, and what they do. तो यूजर आईडी के अंदर आपके पास बच्चों ये तीन इंफॉर्मेशन होती हैं: नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस एंड व्हाट दे एक्चुअली डू. नाउ
यूजर बच्चों क्या करता है, अलोंग विद द पब्लिक की और यूजर आईडी, ये दो चीजें सेंड करता है किसको, सर्टिफिकेट अथॉरिटी को। अब सीए क्या करती है बच्चों, इसको सीए क्या करती है बच्चों, यहाँ पे आपके पास सीए के पास भी क्या होती है, सीए की अपनी होती है प्राइवेट एंड द पब्लिक कीज, प्राइवेट की एंड द पब्लिक की। और सीए को बच्चों दो तीन चीजें और मिल जाती है, यूजर आईडी और पब्लिक की ऑफ द यूजर एज वेल। तो दीज बोथ थिंग्स आर ऑफ द सीए। अब ये क्या करता है, सबसे पहले बच्चों ये यूजर आईडी को आइडेंटिफाई करता है, चेक करता है, वेरीफाई करता है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूजर आईडी, अगर ये यूजर आईडी बच्चों करेक्ट निकलती है, ठीक निकलती है, परफेक्ट होती है बच्चों, देन वो इस यूजर आईडी और बच्चों क्लाइंट की पब्लिक की को ऑफ क्लाइंट एनक्रिप्ट कर देता है बच्चों यूजिंग इट्स पब्लिक की। तो सी अपनी पब्लिक की से बच्चों क्या करता है, इसको पूरा एनक्रिप्ट कर देता है। और बच्चों फर्दर जितना भी डिटेल्स होती हैं, जितना भी डाटा होता है आपके पास, जितना भी रिक्वायरमेंट होती है आपके पास, इन सारी चीजों को बच्चों एट द डे एंड वो अगेन अपनी प्राइवेट की से भी क्या कर देता है, सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, अपनी प्राइवेट की से भी क्या करता है, एनक्रिप्ट कर देता है। ऑल द यूजर डाटा, ऑल द इंफॉर्मेशन, तो वो अपनी प्राइवेट की से भी क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करता है। और जैसे ही बच्चों वो अपनी प्राइवेट की से इसको एनक्रिप्ट करता है, so बच्चों the document that is obtained is called digital certificate. So I am repeating my words. क्लाइंट ने बच्चों क्या करा आपके पास, क्लाइंट सेंड्स टू इंफॉर्मेशन, यूजर आईडी और पब्लिक की अपनी सेंड करी सर्टिफिकेट अथॉरिटी को। सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने बच्चों पहले यूजर आईडी और पब्लिक की को ऑफ द यूजर अपनी पब्लिक की से एनक्रिप्ट करा, और फिर उसने सारी इंफॉर्मेशन को अपनी प्राइवेट की से क्या कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया। एंड द डॉक्यूमेंट दैट इज ऑब्टेन्ड नाउ इज कॉल्ड अ डिजिटल सर्टिफिकेट। सो अब ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है बच्चों आपके पास, ये सर्टिफिकेट आपके पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। सर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है बच्चों आपके पास इस डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर। लाइक it contains the version number,
It contain serial number of certificate. It contain name of certificate issuer. It contain organization details. It contain public key of the client. It contain digital signature as well. It contain validity of the certificate. और ये सर्टिफिकेट बच्चों फिर वापसी सेंड कर दिया जाता है टू द क्लाइंट. So after performing those all encryptions and all key methods, ये सर्टिफिकेट बच्चों रिटर्न कर दिया जाता है to the client again back. So I am again repeating बच्चों my words. यूजर ने क्लाइंट ने सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहले स्टेप था बच्चों आपके पास क्लाइंट ने अपनी पब्लिक की और यूजर आईडी सेंड करी थी टू द सर्टिफिकेट अथॉरिटी. सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने बच्चों इन दोनों को एनक्रिप्ट करा था यूजिंग इट्स पब्लिक की. और बच्चों फिर उसने क्या करा था थर्ड स्टेप के अंदर जितना भी डाटा जितनी भी कीज थी सबको अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर दिया था. और जैसे उसने अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करा सारी चीजों को एनक्रिप्टेड एनक्रिप्टेड यूजर आईडी एनक्रिप्टेड पब्लिक की इन सब चीजों को जब वो अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करता है अगेन तो बच्चों then we obtain a digital certificate. And digital certificate contains all the information like version number, serial number, name of the certificate issuer, organization details, public key, digital signature, and validity of the certificate. And then this certificate is returned back to the client. और अब कोई अगर थर्ड पर्सन एक्सेस करना चाहता है बच्चों कि आप ऑथेंटिक है या नहीं है तो बच्चों ये अपना डिजिटल सर्टिफिकेट सेंड करेगा. और ये डिजिटल सर्टिफिकेट ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी से कंफर्म कर लेगा कि either this certificate is perfect, fine or not. So बच्चों this is how the phenomena goes on. This is how we obtain a digital certificate. Now moving forward आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे अब and now let's talk about another phenomena. And बच्चों this phenomena is called quantum cryptography. This is the last topic of the chapter that is called the security. This phenomena बच्चों is called quantum cryptography. So now when we talk about the quantum cryptography stuff, बच्चों क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है हमारे पास लेट्स सी. इट इज अ फिनोमेना अगेन ऑफ एनक्रिप्शन. इसके अंदर भी बच्चों हम लोग अपनी कीज को अपने डाटा को एनक्रिप्ट करते हैं बट इन दिस एल्गोरिथम द एनक्रिप्शन इज अनब्रेकेबल.
and this encryption can only be applied in optic fiber cables. So how we perform this encryption बच्चों? Before we start this encryption method, you should know few definitions. आप लोगों को कुछ definitions पता होनी चाहिए. सबसे पहले quantum cryptography होती क्या है? You should know. तो बच्चों, in quantum cryptography, what we do, we utilizes the physics. We utilizes the physics of photons. And photons क्या होते हैं आपके पास? They are light energy particle, and their physical quantum properties to produce unbreakable code या unbreakable encryption method. ज्यादा बेहतर होगा unbreakable encryption method. In this phenomena बच्चों, we are going to use a qubit. हम एक qubit use करते हैं. We use a qubit. अब you people must be wondering, sir, qubit क्या होती है? तो बच्चों, qubit is actually the basic unit of a quantum information called quantum bit. And the protocol बच्चों that we uses in this quantum cryptography, that algorithm is called QKD. QKD, quantum key distribution. Quantum key distribution. So this is the algorithm बच्चों that we use in quantum cryptography. ये algorithm आपको क्या explain करता है? This is a protocol uses quantum mechanics to securely send and receive encryption keys over optic fiber cables. So बच्चों, ये तो हम लोगों ने बात कर ली रिगार्डिंग द थ्योरी स्टफ. थ्योरेटिकल हम लोगों ने यहाँ पे बातें कर ली, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. तो वी टॉक्ड अबाउट द थ्योरेटिकल स्टफ ओवर हियर. अब आते प्रॉपर वर्डिंग के ऊपर, अब प्रॉपर काम के ऊपर कि हाउ एक्चुअली दिस क्वांटम क्रिप्टोग्राफी वर्क्स. सो सबसे पहले बच्चों क्या होता है आपके पास यहाँ पे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के अंदर? वी आर हैविंग अ सेंडर. अच्छा, रिमेंबर दिस कैन ओनली बी अप्लाइड, सिर्फ ये बच्चों यूज की जा सकती है इन ऑप्टिक फाइबर केबल्स के अंदर, बिकॉज वी ट्रांसमिट द डेटा we transmit the data in the form of
लाइट की फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, डाटा को ट्रांसमिट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो दिस कैन ओनली बी यूज्ड इन ऑप्टिक फाइबर केबल्स, इसके अलावा आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब करते क्या हम लोग यहाँ पे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप ऑन द सेंडर साइड, दिस इज आवर सेंडर, हमारे पास क्या होती है, वी आर हैविंग द कीज, वी आर हैविंग द कीज। इन कीज को बच्चों हम लोग पास करते हैं थ्रू अ लाइट सोर्स। सो थ्रू अ लाइट सोर्स हम इन कीज को पास करते हैं एंड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू light energy particles, or we can say they are converted into photons. So हमने क्या करा, अपनी की को लाइट सोर्स से पास करा एंड वी कन्वर्टेड those keys into photons. And photons क्या होते हैं, photons are actually light energy particles. Now what we did बच्चों, इन photons को हमने पास करवाया through polarizers. So we pass these photons through polarizers. पोलराइजर्स बच्चों क्या करते हैं, इनको हर फोटोन को, हर लाइट एनर्जी पार्टिकल को एक डायरेक्शन अलॉट कर देते हैं। क्या करते हैं, अलॉट्स अलॉट्स अ डायरेक्शन टू every photon, but बच्चों that direction is of course assigned randomly. पोलराइजर्स क्या करते हैं, आपके पास एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर आपकी वेव को क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं। क्या करते हैं, हम अगेन रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, पोलराइजर्स एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर आपके फोटोन्स को पास करवाते हैं। बच्चों अब वो सर्टेन डायरेक्शन क्या होता है, दैट सर्टेन डायरेक्शन इज, अगर आपके पास फोटोन की वैल्यू 1 थी, तो अगर आपकी वैल्यू 1 होती है तो हम लोग असाइन करते हैं उसको उसको हम लोग पोलराइजेशन करते हैं, वर्टिकल पोलराइजेशन करते हैं हम उसकी, वर्टिकल पोलराइजेशन। तो अगर हमारी बच्चों फोटोन की पोलराइजेशन वर्टिकल हुई भी है, so this means this is going to store 1 bit. तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, द वैल्यू विल बी 1 bit. और अगर बच्चों इसकी हमने डायरेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन कर दी, now this is going to store 0 bit. This bit is now is going to be considered as 0. तो अगर आपको 0 सेव करना है तो आप हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन कर देते हैं, अगर आपको 1 सेव करना है तो आप वर्टिकल पोलराइजेशन करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों इतना आसान मेथड नहीं है ये, हम यहाँ पे एक और तरीके से पोलराइजेशन करते हैं और ये रैंडमली होती है। कुछ बिट्स को हम लोग वर्टिकल करेंगे, कुछ को हॉरिजॉन्टल, और कुछ को बच्चों हम लोग कर देते हैं 45 डिग्रीज टू द राइट। तो 45 डिग्रीज टू द राइट का मतलब क्या होता है, हमारे पास डायगोनल, और ये भी बच्चों क्या स्टोर करेगा आपके पास, इट्स गोइंग टू स्टोर 1।
and similarly we can do 45 degrees to the left as well, and again diagonal. So ये आपके पास स्टोर करेगा 0. So this is how हम रैंडमली, अब ये जितनी भी बिट्स होती है हमारे पास, हम उनको रैंडमली क्या करते हैं बच्चों, ये वैल्यूज असाइन कर देते हैं. हम लोग रैंडमली क्या करते हैं, इन बिट्स को ये वैल्यू, ये सीक्वेंस असाइन करते हैं. ये बात भी लिख दूं भाई यहाँ पे. रैंडमली असाइंड. नाउ अब बच्चों जो रैंडमली असाइंड पैटर्न होता है हमारे पास, पोलराइज्ड फोटॉन्स जो होते हैं, हम थ्रू ऑप्टिक फाइबर केबल क्या करते हैं, रिसीवर को सेंड करते हैं. So you can say through optic fiber cable we travel the randomly generated polarized photons, and these photons are polarized, मतलब we assigned a certain direction to them. ठीक है. अब रिसीवर साइड पे बच्चों हमारे पास क्या होता है, at the receiver side we are having two beam splitters. Let me check, अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास. No, we are good till now. अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है. परफेक्ट. अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, at the receiver side we have two beam splitters. हमारे पास क्या होते हैं, दो बीम स्प्लिटर्स होते हैं. So these are the बच्चों beam splitters. Beam splitters. One beam splitter बच्चों is for the diagonal waves. One beam splitter बच्चों is for the diagonal waves, and one beam splitter बच्चों is for, एक beam splitter बच्चों आप लोग के पास होता है for diagonal, we assign it x, and another beam splitter बच्चों is for horizontal या vertical, so we assign it as y. So this is your diagonal waves, and this is for vertical, या you can say horizontal. और बच्चों इन बीम स्प्लिटर्स के पीछे we are having photon detectors. तो बच्चों ये फोटोन डिटेक्टर्स क्या करते हैं आपके पास, ये फोटोन डिटेक्टर बच्चों जज करते हैं कि इधर इट वाज अ 1 और इट वाज अ 0, और ये आपके पास एक सीक्वेंस जनरेट करते हैं. क्या करते हैं, एक सीक्वेंस जनरेट करते हैं बच्चों आपके पास, एंड दैट सीक्वेंस इज जनरेटेड एट द रिसीवर एंड, लाइक x. अब अगर आपकी बीम जो थी वो डायगोनल थी तो x, और अगर आपकी बीम बच्चों वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल थी तो इट विल बी y. तो एक रैंडम पैटर्न जनरेट हो जाता है आपके पास लाइक दिस x x
y x x y x x y and so on. Now बच्चों, we have a question. Sir, I joined a bit late. Can you give me a quick recap what you teach at the starting, please? फाखिर, कब तुमने ज्वाइन किया था, मुझे थोड़ा सा अपडेट करोगी बेटा? मतलब क्वांटम क्रिप्टोग्राफी से स्टार्ट करा था? नहीं, अब मुझे याद नहीं कि मैंने किस टाइम पे क्या स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक अपना आखिरी सिक्योरिटी के चैप्टर के अंदर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी देख रहे हैं। दिस इज द मेथड फॉर एनक्रिप्टिंग द डाटा, और दिस इज द मोस्ट सिक्योर मेथड दैट इज बीइंग डेवलप्ड इन द वर्ल्ड। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वी यूज द फिजिक्स ऑफ फोटॉन्स। हम अपनी लाइट को फोटॉन्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन वी ट्रांसमिट द कीज। सो व्हाटएवर द एनक्रिप्शन कीज वी आर हैविंग, इसको लाइट सोर्स से हम लोग कन्वर्ट करते हैं फोटॉन्स के अंदर, और फोटॉन्स को फिर हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली पोलराइज करते हैं। पोलराइजेशन क्या होती है कि हम हर बिट को एक रैंडम डायरेक्शन असाइन करते हैं, रैंडम एंगल असाइन करते हैं हर बिट को। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड, ये तो आपको पता ही था। तो रैंडमली हम लोग ये असाइन करते हैं, फिर हम लोग के पास जो रैंडमली असाइन फोटॉन्स होते हैं, थ्रू ऑप्टिक फाइबर केबल हम अपने रिसीवर को सेंड करते हैं। रिसीवर साइड के ऊपर वी आर हैविंग 2 बीम स्प्लिटर्स, वन बीम स्प्लिटर इज फॉर द डायगोनल फोटॉन्स एंड वन बीम स्प्लिटर बच्चों इज फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोटॉन्स। अब जब ये आपको रिसीव होते हैं तो बैक एंड के ऊपर आपका फोटोन डिटेक्टर लगा हुआ होता है, और ये फोटोन डिटेक्टर क्या करता है, जज करता है, एक पैटर्न जनरेट करवा लेता है पूरा, कि इधर इट वाज एक्स वाई, मतलब हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल था, व्हाटएवर, या डायगोनल था आपके पास, से पूरा एक पैटर्न जनरेट कर लेता है। नाउ योर रिसीवर, अब ये रिसीवर आपका क्या करता है, वापसी सेंड करता है ये पैटर्न जो बच्चों इसने जनरेट किया होता है, ये वापसी सेंड करता है बच्चों सेम पैटर्न बच्चों सेंड किया जाता है टू द सेंडर अगेन। अब सेंडर क्या करता है, अपने एंड के ऊपर कंपेयर करता है जो उसने सेंडिंग साइड के ऊपर ये सीक्वेंस सेंड किया होता है। तो सेंडर क्या करता है, अपने एंड के ऊपर कंपेयर दिस सीक्वेंस विद द सीक्वेंस दैट वाज जनरेटेड। और बच्चों अगर ये आपके पास पैटर्न दोनों सेम होते हैं, सो दिस मीन्स नाउ योर sender and receiver are fully synchronized। अब ये दोनों क्या हो चुके हैं, आपके पास फुली सिंक्रोनाइज्ड हो चुके हैं आपके पास। अब all the keys, all the data will be transmitted through the optic fiber cable using the same sequence pattern। तो बच्चों same sequence of the beam splitters will be used at the sending and at the receiving side for transmission of the keys as well as for the encryption of the keys। तो हम लोग सेम पैटर्न अब यूज करेंगे दोनों एंड्स के ऊपर, एंड दिस इज हाउ योर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी बच्चों एक्चुअली वर्क्स। सो इसको बच्चों मैंने वर्डिंग की फॉर्म में लिखवाया हुआ है, तो जब मैं आप लोग के साथ पीडीएफ शेयर करूंगा इस चैप्टर की, जिस चैप्टर एंड होता है यहाँ पे, तो आप लोग का पूरा आप लोग को वर्डिंग की फॉर्म में भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अगेन लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप के व्हाट वी हैव डन एट द सेंडर साइड। मैं नंबरिंग कर देता हूँ। एट द सेंडर साइड हमारे पास कीज थी, हमने कीज को पास करा बच्चों थ्रू लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स से वो कन्वर्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और फोटॉन्स को हमने क्या किया, पोलराइज कर दिया इन डिफरेंट डायरेक्शंस डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। हमने उनको रैंडमली क्या करा, पोलराइज कर दिया बच्चों।
This sequence is randomly assigned. Then बच्चों we transmit this randomly assigned photons through the optic fiber cable to the receiver. At the receiver side, we were having beam splitters. और beam splitters ने बच्चों क्या करा, आपका अगेन एक सीक्वेंस जज करा कि either it was x y x y x y. तो हमने क्या करा, हमने पूरा एक सीक्वेंस यहाँ पे क्या करवा लिया, जनरेट करवा लिया. तो दिस वाज द सीक्वेंस ऑफ द बीम स्प्लिटर्स. ठीक है, फिर हम लोगों ने बच्चों ये सेम सीक्वेंस क्या करा, ट्रांसमिट करा टू द सेंडर. सेंडर ने बच्चों इसको कंपेयर करा, कंपेयर दिस सीक्वेंस विद द सीक्वेंस दैट वाज जनरेटेड with sequence that was generated. और बच्चों अगर ये दोनों पैटर्न सेम है, so now your sender and receiver are fully synchronized, and the last step, all keys and data will use same sequence for encryption and the decryption as well बच्चों. So this was all about बच्चों quantum cryptography. I hope आप लोग को यहाँ पे इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी. और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या होता है, यहाँ पे एंड होता है बच्चों. The next chapter that we are going to start, that chapter बच्चों is called AI, artificial intelligence. थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है because a lots of theory is being involved in that chapter. So बच्चों मैं थ्योरी आप लोग को ऑफ कोर्स क्लास के अंदर नहीं लिखवाऊंगा, मैंने पहले सब लिख लिए because I taught that chapter somewhere else. So वो बस थ्योरी हम लोग जर्नली क्या करेंगे, क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, और आप लोग के जो भी कंसर्न्स होंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. So we are going to convert that theory into a discussionable topic of AI. और फिर इसके अंदर हमारे पास दो algorithms आते हैं. One of the algorithms is called A star algorithm, and the other algorithm बच्चों is called Dijkstra's shortest path algorithm. That algorithm is being used in Google Maps. So वो algorithm आपका सिलेबस का पार्ट है that we are going to study. और उसके बाद हमारा AI का टॉपिक बच्चों कवर अप होगा. Then we are going to move towards the paper 4 topics, जो आप लोग का सूडो कोड के टॉपिक्स जो आपके सिलेबस का पार्ट है. तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज. टेक केयर. बाय बाय and stay safe. Yes, of course, I will share the PDF.